हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चरल पार्ट, वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते क्या हैं? दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइट. They are found in the variety of foods like eggs, seafood, legumes, nuts, seeds and meats. जो भी प्रोटीन्स हम खाते हैं, they get broken down into smaller molecules and they reform into some new proteins. Got it? So there are 5 amino acids. For example, alanine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid and serine. These we get from the food. So these are also called as the non-essential amino acids. And there are 6 amino acids like arginine, cysteine, glutamine, glycine, proline and tyrosine. ये प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी खुद बना सकती है under the normal circumstances if a body is healthy. So these are the conditionally essential amino acids. So now we'll discuss how the proteins travel in our body, how they get broken down. So let's get started. Proteolysis, that is the breakdown of proteins. Proteins का breakdown जो है शुरू होता है जब food जो है it reaches the stomach. वहाँ पे जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है that is HCl, वो डीनेचर कर देता है प्रोटीन को. That it causes unfolding of the proteins and they break down into the amino acids. Then there is an enzyme called pepsin. It is made by the gastric chief cells. Gastric chief cells ये क्लीव कर देते हैं इन प्रोटीन्स को into smaller oligopeptide chains. And then they further move into the duodenum part. Now जो digestive enzymes होते हैं पेनक्रियास के द्वारा बनाए जाते हैं. They further break these oligopeptides into tripeptides, dipeptides and some amino acids. जो ये digestive enzymes होते हैं ये oligopeptides को भी और break down कर देते हैं tripeptides, dipeptides और amino acids में. Then these enter the intestinal cells. वहाँ पे जो है जो tripeptides होते हैं they get broken down into amino acids. Now they synthesize some intestinal enzymes and new cells and most of them enter the bloodstream. काफी सारे प्रोटीन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं. They get transported to other parts of the body. This is how the proteins travel in our body and observed. Now we'll discuss the protein structures. First is the primary structure. जो primary structure होता है उसके अंदर लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की. जब 2 अमीनो एसिड्स लिंक करते हैं they have a peptide bond in between them. Number of polypeptide chains together form proteins. जब काफी सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं they form a polypeptide chain and they further together form the amino acids. जो अमीनो एसिड जो हैं वो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में which is a characteristic of a specific protein. यानी जो भी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होगी वो डिसाइड करती है कैसा प्रोटीन बनने वाला है. वो क्रिएट करती है डिफरेंसेस बिटवीन वन अमीनो एसिड टू अनदर. नाउ द प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सीक्वेंसिंग द जीन दैट एनकोड्स प्रोटीन. या तो हम जीन की सीक्वेंसिंग कर ले या फिर हम डायरेक्टली प्रोटीन की ही सीक्वेंसिंग कर ले, उससे हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Now some genetic disorders are caused by the mutation. जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, they cause some genetic disorders like cystic fibrosis, sickle cell anemia and albinism. Now come to the secondary structure. जो secondary structure होता है it is due to the folding of the peptide chain. Peptide chain में जब folding start हो जाती है and ये क्यों होती है? Due to the interaction between the amine group, that is amine group NH group and the carboxyl group CO group of the peptide link. This is how this takes place. This is the amine group and this is the
carboxyl group. Between H and O, hydrogen bond is formed. And there are two forms of secondary structure, alpha helix and beta pleated sheets. जो alpha helix होते हैं वो मोस्टली कॉमन होते हैं एंड दे हैव स्पाइरल शेप्ड होते हैं ये, एंड they are arranged such that the side chain of amino acid remain outside, and basically they are stabilized by the hydrogen bonds. और जो beta plated sheets होती हैं they can be parallel and anti-parallel fashion. Got it? Now come to the tertiary structure. जो tertiary structure होते हैं ये तब होती है जब when there is a further folding in the secondary structure of proteins में और भी foldings आ जाएं and the arrangement of protein in a 3D space. And इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वंडरवाल फोर्सेस एंड आयोनिक इंटरेक्शंस होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सो दैट ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबलाइज रहे. नाउ कम टू द क्वाटनरी स्ट्रक्चर. क्वाटनरी स्ट्रक्चर में जो है स्पेचुअल अरेंजमेंट होता है ऑफ वेरियस टर्शरी structure that give rise to this structure. Got it? So I hope you get the differences between the protein structure. And now we'll see the difference part with the help of a diagram. This is the linear chain of amino acid, that is our primary protein structure, and this is the beta plated sheets, and this is the alpha helix where the hydrogen bonds stabilize the structure. Now come to the tertiary protein structure, that is the 3D folding of the structure due to the side chain interaction. That is the, it can be also a folding of the secondary structure like beta plated sheets and alpha helix. Now come to the quaternary structure, the protein consisting of more than one amino acid chain. जब further folding हो जाए tertiary structures में, जब quaternary structure form होता है. So I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.